Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today, we're going to be watching another KK Create video, and this one is in regards to Hindi and how it killed Rajasthani, Bhojpuri, and 250 plus other languages. So, from my cursory knowledge on this subject, essentially, like the central government denoted that Hindi was going to be the main language, and in many regions there are, there's languages specifically for those regions, for those states, for those districts and whatnot. And it just like slowly over time, Hindi was denoted as the actual language there. And even if somebody spoke like Bhojpuri or Rajasthani or something along those lines, they would still be classified and counted as Hindi. So yeah, it's that's as much as I really know about it. I did watch another video on it earlier in the year. So like I said, I know the very very bare minimum, I guess. I saw this video and I wanted to watch it. I like KK Create. She makes fun videos. She makes interesting little videos. So I figured, hey, why not? Let's give it a watch, right? The link to the video will be in the description down below. So if you want to go and watch KK Creates channel, if you haven't already, I see that she has 1.3 million subscribers. That's crazy. I wonder how. When I first found her, she'd had like almost none, right? Like just a couple thousand. Now she has 1.3 million. Crazy, absolutely wild. Anyways, let's watch the video, guys. Let's watch the video. हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। इसी हिंदी के अंदर एक दो नहीं 56 मदर टंग्स आती हैं और इन 56 मदर टंग्स को लैंग्वेज नहीं हिंदी का ही डायलेक्ट माना जाता है। Yeah, dialect. That's the word I was looking for. Different dialects. And the reason I want to bring this up, the reason I'm watching this video specifically is because I am going to be watching a couple more language specific videos coming up. One of which is how, like, the origin point of English, and it goes back to like Germanic, and then it goes even further back to like a proto Indo-Germanic. So it's weird. It's crazy. I haven't actually watched the video or read anything on it, so I just want to start like doing a little bit more focusing on different languages and whatnot, as well as get into the occasional history stuff. But I'm still gonna upload a little bit of everything, a little bit of everything to the channel. But yeah, that's why I'm specifically watching this video today, because I want to learn more about the languages. All right. शायद इसीलिए ये मिथ क्रिएट हुआ है कि सब लोग हिंदी बोल सकते हैं। 2011 के सेंसस ने भी बताया कि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन It's still crazy that the 2011 census is the census that's being used, but I guess because COVID, it got pushed back to 2025, right? Yeah. 43% है, लेकिन इनमें से अगर ये डायलेक्ट्स ये मदर टंग्स हटा दें तो ये पॉपुलेशन बस 26% बच जाती है। 26%, wow. ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। आज इसी एरिया को हिंदी बेल्ट भी कहते हैं, पर यहाँ हिंदी से बहुत पुराना Yeah, look at this. Holy heck. Haryanvi, Bagri, Marwari, Malwi, Billy, Bundeli, Bagheli, Chatsagari, Magai, Bajapuri, Garhwali, Kongri, Owadi, Braj, Basa. Did I say any of those correctly? I knew a couple of these. There's some here that I didn't know, but I actually knew like at least half of these prior to this. Did I say Kumawini? I don't know if I did. और रिच लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें लैंग्वेज माना ही नहीं जाता, हिंदी का ही डायलेक्ट माना जाता है। इसीलिए तो हिंदी से लड़ाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया की नहीं है। हिंदी से लड़ाई Isn't in Bihar, aren't they fighting to make a Bhojpuri one of the official languages rather than Hindi? नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी लड़ रहे हैं सालों से। ये वीडियो बनाने के लिए हमने हर स्टेट की साइट से डेटा निकाला और उसे मैप्स में प्रेजेंट किया, लोकल से बात की। तो ये वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ये वीडियो ना एंड तक देखना क्योंकि वहां पर रोल है ऑफ आवर करंट गवर्नमेंट। The current ये मैप government. दिखाता I है knew द that word. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट्स। हिंदी शेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है 10 इंडियन स्टेट्स की। पहला स्टेट जिसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था ये बिहार, 1881 में ही कर दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय 99% बिहारियों की मातृभाषा हिंदी नहीं थी।
आज इन 4 स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, पर चारों में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज हिंदी नहीं है। उत्तराखंड में तो टॉप 5 लैंग्वेजेस में हिंदी आती ही नहीं। राजस्थान में हिंदी बोलने वालों से ज्यादा राजस्थानी बोलने Wow. वाले हैं। झारखंड में खोटा, हिमाचल में पहाड़ी और Now here's the thing though. Now I understand that they're dialects, they're specifically different dialects, but you can kind of understand, correct? Like there are going to be similarities to the point where you can understand, like if you were to talk to one another. I see Urdu here in Uttarakhand. Really? Oh, how widespread is Urdu? Because I know like isn't Urdu? Oh, look, Urdu is in Jharkhand as well. I know Urdu is more is like more like Muslim oriented, right? Like Pakistan, their official language is Urdu. Interesting. There's a oh geez, India and Pixels video that I have planned on watching to that goes into detail between Urdu and Hindi. Actually, I think I have it docketed it up. Yeah, are Urdu and Hindi really different. So this is one of the videos that I wanted to watch, and then this was the other video that I wanted to watch, tracing English as far back as possible, and it goes to like Proto-Indo-Germanic. It seems kind of crazy. Anyways, let's get back to the actual video I'm reacting to right now. Anyways. कांगड़ी, पर फिर भी इन सब स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है। वर्ल्ड की 1/3 लैंग्वेजेस इंडिया में है, 1600 Wow. से ज्यादा। उनमें से बस It's Indonesia that has the most languages in the world, right? I think it's Indonesia, right? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हिंदी भी है। इसी के अंदर एक दो नहीं 56 मदर टंग्स आती हैं जिन्हें डायलेक्ट्स कहते हैं। इन मदर टंग्स को 1000-2000 नहीं लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं। 56 टोटल मदर टंग्स हैं, उनमें से 26 के 10 लाख से ज्यादा स्पीकर्स हैं। हरियाणा की हरियाणवी 90 लाख लोग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी 1.5 करोड़ से ज्यादा। राजस्थान की राजस्थानी 2.5 करोड़ से ज्यादा। बिहार की Wow. भोजपुरी तो 5 करोड़ लोग। Wow. पर फिर भी हम इन्हें लैंग्वेज नहीं मानते, हिंदी का ही डायलेक्ट मानते हैं। बिहार में 77% लोग Is this that's like people be speaking Bhojpuri. That's probably more than like some official languages around the world, right? Like I'm sure there's something that's hardly spoken somewhere, but it's like constituted as an official language for like an entire country. हिंदी बोलते हैं। पर डायलेक्ट्स हटा दो तो बस 25% बच जाते हैं, 1/3 हो जाते हैं। झारखंड में भी, राजस्थान में भी, हिमाचल में उससे भी कम हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में Himachal. 83% से 10% बच जाते हैं, 1/8 हो जाते हैं। तो सोचो कि I'm always कितने सारे लोग mispronouncing एक्चुअली Himachal, so हिंदी नहीं I'm glad to बोलते hear it, हैं, हिंदी Himachal. के डायलेक्ट्स बोलते हैं। चलो फिर भी मान लेते हैं कि हिंदी स्पीकिंग ही मेजॉरिटी है, पर कौन सी हिंदी, किसकी हिंदी? आज 3 डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज को हिंदी का ही पार्ट माना जाता है। पहाड़ी लैंग्वेजेस जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, बिहारी लैंग्वेजेस जैसे भोजपुरी, मगही, राजस्थानी लैंग्वेजेस जैसे मारवाड़ी, राजस्थानी, सब हिंदी का ही पार्ट मानी जाती हैं। शायद ये They're इसलिए all होता considered होगा part of क्योंकि Hindi. Can we take a look at these? Man, imagine trying to keep up with all this. Oh no. I gotta try to remember some of these names so I can remember them for future references. राजस्थानी, सब हिंदी का ही पार्ट मानी जाती हैं। शायद ये इसलिए होता होगा क्योंकि हिंदी बोलने वालों को ये डायलेक्ट समझ आ ही जाते होंगे। पर क्या आपको पता है कि आज हिंदी में स्नो के लिए बस एक वर्ड है, बर्फ। पर पहाड़ी लैंग्वेजेस में स्नो के लिए 130 से भी ज्यादा Why do you need 130 words for snow? I'm trying to think like even in English, like what else would you need the word for snow? Snow? I don't know. Pahari has 130. Is that am I yeah, 100 Burf? Wait. एक वर्ड है, बर्फ। पर Burf? Is that how you say snow? Burf? क्या आपको पता है कि आज हिंदी में स्नो के लिए बस एक वर्ड है, बर्फ। पर बर्फ। पहाड़ी लैंग्वेजेस में स्नो के लिए 130 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं, जहां हिंदी में कंगारू के लिए कोई India has no word for kangaroo. Many of these dialects do. How would they have a word for kangaroo though? Because kangaroos
weren't known to India um, until way later, right? Unless they were in connection with Australia before everyone else. What? Okay. वर्ड है ही नहीं, इन सभी डायलेक्ट्स में है। हिंदी में ना जेंडर का कॉन्सेप्ट हर चीज में है। लेकिन मैथिली में जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, राम आ गया, राम आए के, सीता आ गई, सीता आए के, पपीता आ गया, पपीता आए के, लौकी आ गई, सजमन आए के। इसीलिए Whoa. So that must be difficult. Okay. Well, then you could just be confusing a lot of things if like if you're trying to communicate between the two dialects and one's gendered and one's not gendered. That could lead to some like major confusion. Weird. Okay, I didn't know that. तो हिंदी के डायलेक्ट्स के रूल्स और लिहाज बहुत अलग हैं हिंदी की लैंग्वेज से। इसीलिए मेरे को हिंदी तो आती है, पर फिर भी मैं हिंदी के कई डायलेक्ट्स समझ नहीं सकती। यही पॉइंट प्रूव करने के लिए आई रीच्ड आउट टू यू। हाय, आई नीड योर हेल्प। अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो ना, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माय लॉन्ग वीडियो। प्रणाम काव्या दीदी, की हाल छे? नमस्ते जीजी। राम राम सा खमा गणी। अब बिहार से रहो, सबके प्रणाम। जय जोहार। अहाँ सबका प्रणाम। जय माँ भगवती। खमा गणी। हेलो हेलो हेलो, काफी सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे तो, बट तुम्हारी लैंग्वेज को तो हिंदी का ही डायलेक्ट मानते हैं, लैंग्वेज मानते ही नहीं है। तो चलो बोल के दिखाओ कुछ अपनी लैंग्वेज में, देखते हैं कि एक हिंदी स्पीकर को समझ आता है या नहीं। हमरा जोन सिवान जिला के सबसे खास बात ई बा। Well, here's the proof of it right here. Here's the proof that it's not Hindi. The auto captions isn't capturing it, so Google doesn't constitute this as Hindi. So yeah, Google will constitute this as Bhojpuri, I bet you. If we go into the auto translations or whatever, yeah, Bhojpuri is literally right here. Look at that. हमरा जोन सिवान जिला के सबसे खास बात ई बा। It's not working. कि हमरा जोन सिवान जिला के It's not working. Why is it not working? Did I do it in the wrong order? Do I have to do like I don't know. the सबसे खास this is so complicated. So it's going from why is it still constituted as English India Indian English to English? I don't know. Listen, the whole YouTube auto translate is very very frustrating. But as you can see there, they do have it as its own separate language. बात ई बा कि हमने के I have no idea देश what के he's saying, by the पहला way. राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद I knew some of उनकर those घर words. सिवान जिला में बा। कोरबा शहर के नाम यहाँ के जनजाति कोरबा के नाम में रखे गए हैं और हमार शहर हा खनिज संपदा ले संपन्न है और छत्तीसगढ़ के पावर कैपिटल के नाम ले जाने जाते। पालमपुर दी में क्या गल दसे है? पालमपुर इन्ना की टाउन है, एड़िया वाली कहानियां, टी गार्डन से लेकर बैजनाथ मंदिर तक। तो मैथिली में महादेवक एक छोट सनक गीत अहाँ के सुनबे ले चाहे छी। सुनियो, बड नीक आ बड मीठ लागत अहाँ के। कि छोटी छोटी रोरी गरैया यो बाबा हमरा चल लो न जैया, चल लो न जैया बाबा बुल लो न जैया, छोटी छोटी रोरी गरैया यो बाबा हमरा चल लो न जैया। इस वीडियो You gotta you gotta love the just the confidence that person had. Just like, all right, hey, guess what? I'm gonna speak, but hey, I'm gonna just belt into song here. Hold on one second. I'm gonna sing you a song in my language. That was really cool. रिसर्च करते हुए ना मुझे बहुत कूल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हिंदी के डायलेक्ट्स के बारे में जो मुझे नहीं पता थे, एंड आई वांट टू शेयर देम विद यू। अवधि से शुरू करते हैं। आज हम जो हनुमान चालीसा गाते हैं वो एक्चुअली हिंदी में नहीं है, अवधि में है। अवधि में ही कई फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं। रंगी सारी मोरा पिया मुझसे बोलत ना। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ी पर।
दिल्ली 6 का ये गाना Interesting. ससुराल गेंदा फूल ओरिजिनली एक छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग है। नेक्स्ट ब्रज भाषा, जिसमें ये फेमस दोहा है। रही मन धागा प्रेम का। ब्रज भाषा में ही ये गाना भी है। मैं नहीं माखन खायो। राजस्थानी लैंग्वेज में ये फेमस गाना है। मतलब हम लोग ये डायलेक्ट्स रोज सुन तो रहे हैं, इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, इन पर थिरक रहे हैं, बट ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि Well, even like me listening to it, I can catch the little different inflections, even though I can't speak the languages right. I could tell they were different languages. ही है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भाषाएं इतनी डाइवर्स हैं कि हिजड़ों की भी एक अलग लैंग्वेज है जिसे सिर्फ ट्रांसजेंडर That only the transgender community use? There's a language? Hold on. North Indian languages are so diverse that Hijra community has its own language that only the transgender or the Hijra community can understand. A transgender specific language? What? Why? She's got to explain why. हिजड़ा कम्युनिटी ही समझ सकती है। और ये And this language also changes every few भाषा भी कोस कोस पर अपना रंग kilometers. बदलती है। I don't know. Only the transgender use. I wonder why. Is that like a thing built upon like persecution in the past maybe? I don't know. फारसी चांट कहते हैं, इसको कोठी फारसी भी कहा जाता है, कोठी फारसी भी कहा जाता है, हिजड़ा फारसी भी कहा जाता है। इसी नॉर्थ इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज भी है, जिसके 7 से 8 वर्जन। So they didn't really explain like the origin point of the transgender specific language. I don't know that I'm sure someone will explain a little bit more in the comments, but I mean when I think of like, oh yeah, the transgenders have their own language only they speak. I don't know. To me, it feels like that is something like rooted in like a long ago, hundreds of years, thousands of years of ago, like a persecution specifically based off that. But as far as I understand, I mean, India has always been very open and accepting of transgenderism. So I don't understand if there'd be any persecution. So at that point, like, I don't know. It caught me off guard. I know, like I'm rambling about that specific topic. It just caught me off guard. है अमेरिकन साइन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग। जैसे साइन लैंग्वेज में मंडे गुजरात में अलग है और दिल्ली में अलग। A, B, C, D। I know a little bit of sign language, not much. बताया गया कि लैंग्वेज just a very very tiny bit. वो है जिसकी स्क्रिप्ट है और डायलेक्ट वो जिसकी स्क्रिप्ट नहीं है। बट ऐसा है ही नहीं। इंग्लिश तक की स्क्रिप्ट नहीं है, रोमन में लिखी जाती है। Yeah. हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से 9 की What is this? Language official script: Bodo, Dogri, Hindi, Konkani, Mathili, Marathi, Nepali, Sanskrit, Sindhi. स्क्रिप्ट नहीं है, देवनागरी में ही लिखी जाती है। Devanagari. Perso-Arabic. That's Kashmiri. Oh, this is also Perso-Arabic. Urdu. Oh, yeah. Okay, yeah, that makes sense. Okay. आज 2 डायलेक्ट्स बिहार की मैथिली और भोजपुरी लिखी जाती हैं देवनागरी में, पर पहले दोनों की अलग स्क्रिप्ट्स थी। आज हिमाचल की पहाड़ी भी लिखी जाती है इन देवनागरी, पर उसकी भी एक अलग स्क्रिप्ट थी, टाकरी। आज उसके कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, टेंपल्स में। This is the first time I'm hearing of this. Huh. लिखी हुई है। ये इंसान टाकड़ी पढ़ सकते थे, बट आज ना वो बचे और ना। Oh my God. Okay, so he was the last speaker, and he died in 2022. Dang. Man, we talked about this before in a different video of like an Andamanese woman who was the last person to speak her language. It's sad. It's sad when an entire language dies. Like this was the last person that could speak it.
Is it gone? It's just straight up just gone forever. Like the legacy of everyone that spoke that language, it's gone. Like you can't get a full understanding unless you specifically know the language, right? Wow. ये स्क्रिप्ट बची। इन रिच पुरानी स्क्रिप्ट्स को बचाने के लिए ना कुछ किया गया ना किया जा रहा है। किसे बचाया जा रहा है? हिंदी को, जो कि एक बहुत रीसेंट लैंग्वेज है, पुरानी नहीं है। हिंदी थी ही नहीं जब सालों पहले कई लैंग्वेजेस ऑलरेडी आ चुकी थी, जैसे भोजपुरी, मगधी, गोरखा, नागपुरिया, अंगिका, बजिका। हिंदी तो बहुत बाद में आई इनके एक अलग ओरिजिन से, पर फिर भी इन लैंग्वेजेस को जो हिंदी से पुरानी है, अलग ओरिजिन वाली है, इन्हें हिंदी का ही डायलेक्ट बोलते हैं आज। Yeah. और आज कई लोग हिंदी को नेशनल लैंग्वेज भी There बोलते is no हैं, national पर हिंदी language. कभी भी नेशनल लैंग्वेज थी ही नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में नॉर्थ इंडियंस ज्यादा थे, पर फिर भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिबेट बहुत तगड़ी और सालों तक चली। इसी तगड़ी डिबेट के बाद निकला मुंशी अयंगर फॉर्मूला, जिसने कहा कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, पर 15 सालों तक इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। 15 Even सालों English बाद isn't. इंग्लिश Yeah. हट के सिर्फ हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली थी, पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 Yeah. साल बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोला कि वो कंसिडर करेंगे हिंदी में गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस कराने का, पर इस आइडिया को बहुत हेट मिला, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फाइनली इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया इंडेफिनिटली। इसीलिए आज इंग्लिश और हिंदी दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आज स्टेट्स भी अपनी अलग-अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। Wait. What? Today, Hindi and English both are our official languages. I guess an official language isn't necessarily a national language, right? Okay. I mean, at least from my understanding, English is pretty well widespread, right? Like if people want to talk to each other between the states on like a governmental level, they typically speak in English, right? Like especially if it's like from the northern states talking to the southern states. पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट कई बार हिंदी प्रमोट करती है, और कई बार प्रमोट ही नहीं, इम्पोज करती हुई भी दिखती है। 50 करोड़ Impose. रुपए 50 crore was allocated for appointing Hindi to teachers in non-Hindi speaking states. Really? इसलिए खर्च किए हैं ताकि नॉन हिंदी स्टेट्स में हिंदी टीचर्स बढ़े। आज I think I भारत की heard about that पार्लियामेंट में before. 70 There was huge backlash to this, right? Like huge backlash. ताकि नॉन हिंदी स्टेट्स में हिंदी टीचर्स बढ़े। आज भारत की Over 70% of cabinet papers are now prepared in Hindi. पार्लियामेंट में 70% एजेंडा हिंदी में प्रेजेंट होता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बोला। एक Wait. Hindi is our Rashtra national language, our identity. We should be proud of it. Naidu said at an event in Ahmedabad, Gujarat. Wow. एड्रेस में 2014 से हमारी जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स आई है ना, उनमें मोस्ट का नाम हिंदी में है। केंद्रीय विद्यालय भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्कूल चेन है, वहां भी हिंदी कंपलसरी करने का ट्राई। Compulsory in up to 10 class 10 in CBSE schools in Kendiri Vidyalayas. I'm so bad at I'm so bad at some of these words, man. I'm so sorry. JNU जैसी I can't even say English words correctly half the time. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सैलरी स्लिप्स इंग्लिश से हिंदी में निकलने लग गई हैं। कई सारे गांव शहरों को हिंदी नाम दिए गए हैं। आज एक नॉन इंग्लिश स्पीकर इंडिया की गवर्नमेंट साइट्स अपनी मदर टंग में एक्सेस नहीं कर सकता। That's crazy. That's crazy. What? Non-English, non-Hindi speaker cannot access their own government site? अपनी मदर टंग में That's crazy. Okay, that's too far. एक्सेस नहीं कर सकता है, टैक्स नहीं भर सकता है ऑनलाइन, बैंक वेबसाइट नहीं खोल सकता Wow. है। पर फिर भी हिंदी पर खर्चा तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है। 349 करोड़ खर्च किए 3 साल में। 2018 में बोला कि 400 करोड़ खर्च कर देंगे। कोई लॉजिक हुआ इस बात का? ये तो हिंदी से बेमतलब की दीवानगी हुई। आज हर साल ऑलरेडी हिंदी स्पीकर्स की परसेंटेज बढ़ रही है। Okay, so here's the thing.
It's funny that this is being talked about right now, and also into the 2011 census, so it's probably even higher now. Um, the first language I'm learning is going to be Hindi. I'm sorry to everyone that wanted me to learn like Telugu or Malayalam or Tamil Nadu first, or Tamar. Excuse me, Tamil Nadu is the state. Gosh, I listen. Okay. Anyways, क्या we're उस just पर gonna अभी go. भी खर्चा करते रहना जरूरी है? मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी को प्रमोट करना गलत है, अच्छा है। इनफैक्ट हिंदी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। मैं खुद ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, बट एक भाषा को दूसरे से ऊपर रख देना गलत है। जब तमिल तोड़ा बड़ागा कोटा को डोमिनेट करती है वो गलत है। जब कन्नड़ा तुल्लू कोडावा को डोमिनेट करती है वो गलत है। I've heard जब of Tulu. Um, there's someone बंगाली that असमीज that उड़िया I को talked to डोमिनेट that speaks करती है Tulu. वो गलत है। और जब हिंदी सारी लैंग्वेजेस को डोमिनेट करती है वो भी गलत है। एक ऐसा आइडिया क्रिएट करना कि सब सेम है, सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, गलत है। क्योंकि इंडिया की खासियत ही तो उसकी डाइवर्सिटी है। इंडिया का लास्ट सेंसस हुआ था 13 साल पहले। लिंग्विस्टिक सर्वे तो इंडिपेंडेंस से भी पहले हुआ था। तो सोचो अब लैंग्वेजेस कितनी चेंज हो चुकी होंगी। इंडिया ऑलरेडी टॉप कंट्री है जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस खतरे में है। 11 ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, 197 होने वाली। तो क्यों ना बस एक लैंग्वेज के गुणगान गाने के बजाय हम सबकी लैंग्वेजेस के बारे में जाने। ये 2 यूट्यूब चैनल्स इंडियन लैंग्वेजेस पर बहुत अच्छी Oh yeah, Indian Pixels and the Graphic Earth. The Graphic Earth, fantastic channel, absolutely wonderful channel. I love the Graphic Earth, dude. It's great. वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज आप उनको जाके देखना। आज कोशिश करते हैं ना सबकी भाषाएं जानने का, अपनी भाषा सीखने का। और बताओ आपके स्टेट में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? और अगर भाषाएं पसंद है तो सब्सक्राइब टू योर मेट केके क्रिएट। KK Create. All right. Yeah, I like the video. Again, I just I find learning about languages just so fascinating, right? There's just something so human about language. And I think that's really what it comes down to is to be human is to speak language, right? Like what else speaks language? Like in the way that we do. I don't know. It's just language is super, super fascinating. And then on this whole topic, like of Hindi taking over and all these other languages, taking over the regional dialects and whatnot. It's just like, I don't know. That's almost human in of itself as well, right? If you think about it, like to be human is to speak language. Also, to be human is to conquest, right? Like all throughout humanity, we've encroached and overtaken those that surround us. You can almost think of it like in a human perspective that the languages is encroaching and taking over the languages around, right? Hmm. I mean, that's bad, in a sense of those languages are disappearing, but it's also good in a sense that everyone speaks a common language, so more people can communicate easier. Hmm. I don't know, but it's also very, very incredibly sad knowing that, a language has gone extinct. Crazy. Crazy, crazy, crazy. It's what time it is. It's time to read some comments. We're going to read a handful of comments and see what's up. See what other people thought about the video. Again, I like the video. The video will be linked in the description down below. So, it's a matter of shame in our India, we people, especially we Bihari, who are judged by the so-called Gen Z on the basis of the language that we speak. If one speaks his or her original language, that she is considered as illiterate. Glad to see someone raising the issue. Is that a thing? If you speak your regional language, you're considered illiterate by the Gen Z? That's crazy. India is our country in which language and culture changes every 100 kilometers. True. Finally, you people have started to understand what's happening. Love from Tamil Nadu. We have this person speaking Odia. Our Oriya language is the best. I am a Marathi speaker and Hindi is my second language, but I can somewhat understand all dialects. Also, we must protect
all regional languages. So what is the main differences between Marathi and Hindi when spoken? I mean, there's a lot of differences. I shouldn't say what are the main differences. I'm just saying, like, I think that's an easier jump to know both. And that's the thing as well. Like, yeah, if you know the dialects, you could potentially, somewhat ascertain and learn many of the dialects, right? We South Indians are proud of our regional languages and hate Hindi imposition on us. I've heard that quite a bit. A proud Odia. Odia is one of the classical languages of India. No translation for this. Jai Hindi. We should speak Hindi, but must save our regional languages. See, that's kind of what I was saying earlier. It was like, to bring people together is to bring them all under a specific language, but you also don't want to completely destroy the language, the culture, the history of, those regional languages, the dialects and whatnot. Hmm. My mother tongue is Bhojpuri, and I feel proud while speaking with people in Bhojpuri. Nice. You should feel proud. I'm glad that you raised this topic. The Bhojpuri speakers in our country is more than 50 million. It has its own script, Kathi, it has its own vocabulary, but still government is not adding this language in the scheduled language list. People are saying that Bhojpuri is the dialect of Hindi. You can Google about the history of both Bhojpuri and Hindi. Hindi was developed nearly 700, 800 years ago, while Bhojpuri was developed 1300 to 1400 years ago. The main reason the government is not adding Bhojpuri in the scheduled language is because we'll decrease the Hindi-speaking population with a big margin, and that would decrease the dominance of Hindi. I'm from Varanasi. I love my language, Bhojpuri. Because of Hindi, other languages do not seem to be in danger, but seeing so much English in this comment section, all Indian languages seem to be in danger. Bro, what will happen if I save all the languages? I know this. Brother, I can't speak English, so you can find yourself separately, lonely in a mountain. Nah, we Indians prefer English as a link language, not Hindi. And that's what I was saying. I think English could be a better, because no matter what, right? You need to have at least something in common with all sectors of your country, right? It's if you can think of it like as like a corporation, right? If everyone's running the same operating system for like a computer, you want everyone to be running the similar operating system so they can at least, communicate back and forth. But if you have, 50% of your people running, Windows, 40% people running Mac, and then 10% running, like a Linux, and then like a 1% running like Chrome OS, it's going to be incredibly difficult and tedious to transfer like files and information between the two. I mean, you have different utensils like using email sites, stuff like that, but like actually getting files to transfer back and forth, it's always a little bit cumbersome. Connect if you ever need to like connect the computers. Anyways, I don't know. I'm just trying to think of like a comparison, right? People don't like English, huh? That's interesting. Hindi killed my many languages in northern India and film industries. I'm so glad YouTubers like you still exist in India, educating people by well-researched info, straight to the point and not talking BS, putting actual effort and showing creative ideas into these videos. People like you give a hope to us citizens that we can bring a change. Thank you so much. Please never stop uploading. Here's the corrected version. What? I don't understand. What do you mean? Here's the corrected version. I don't understand what she means by here's the corrected version. Okay. Let's see some of the new comments. Let's see if there's anything interesting in the new comment section. Aryans who came to India subcontinent from Hindu Kush bring this language. Basically, Hindi is derived from Persian. South rejects Hindi from the heart.
Hindi is also our pride. Why are you dividing the North on the basis of language to get different views? Ram. Water changes every mile, speech it changes every mile. This is a saying. Water changes every mile and speech every 4 miles. That is our country, India. The taste of water changes at every mile, and language, i.e. speech, also changes every mile. Does the water change every mile? Kannada language is our language in Karnataka. True. Very good decision. Hindi is a curse. Stop Hindi imposition. Assam from Assam. Odia. Just Odia. See, look, this person, I can speak all of these. If you need any help, just reply. He can speak all of those. Punjabi, Gujarati. And that's kind of what my thinking was. Like, if I learned Hindi first, right? Like, would that be easier for me to learn and understand more of like the northern languages? No, you know, I don't know. It's gonna be difficult for me. It's gonna be like years and years and years. This is something that I'm thinking like a decade out. I want to be able to speak, you know, at least to a decent degree, you know, some of these languages from all the states, right? I don't know. That's just something that I want to do. There's a debate in independent India which language should be the national language. Very interesting debate. The debate's always going on. I am from Tamil Nadu. We will save our mother language. Tamil, please save our oldest and variant of our Indian language. Isn't Tamil like the oldest language? Or one of the oldest languages? I think that's going to be it. Good little video. Again, go check the channel out. The link will be in the description down below. Thank you for watching. Take care. Goodbye.